So, okay, let's start today's session. So, aim is to compare different search engines. Now, you can pick up search engines like Google or Bing, or you can also, since all of you need to do the research, so you can also pick up the search engines like scholar.google.com. So I would suggest that rather than going to a full-fledged search engine, you can pick up these type of search engine because you are also doing research in your field. So in today's lecture, whatever we discuss, you can do on these search engines. So academic.microsoft.com and also the scopus.com. So now we will discuss multiple approaches to that how to compare the size of these search engines and how to know that which search engine has done better indexing. So even though we know that how Scopus index is, they index only uh, some journal or publication is having some quality factor, so which they determine. And Google actually index everything, whatever is on the web. So whatever is visible, Google index everything. But Microsoft index again, they also take care of the quality. So let's discuss these approaches in a mind that these search engines we are going to evaluate. So first approach is we generate a random query. But how to generate a random query? So let's say you are doing a research in let's say you pick up topic in your case. So in your area of research, so you are thinking that the search engine might have lexicon of English word plus some words which are not uh, directly from the English, but maybe nouns or named entities. So these are not part of, let's say, English dictionary, but still these words are there because they are nouns or they are named entities, and this has been generated by crawling the web. And now you can generate conjunctive queries. We know that we need not to write and, even if we have written first word and W2 second word, most of the search engine took automatically and. So we will take 100 results from engineering. Let's say you write a query of keywords that in which you are going to do research on Google Scholar. Get first 100 results. Among these 100 results, pick up a random URL. Let's say any URL among these. Let's say you pick up 60th URL, which is in 60th rank, and check whether this is available in your second search engine. Second search engine could be academics.microsoft.com or it could be scopus.com. ठीक है, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं. अभी करंटली आप रिसर्च के लिए कौन सा सर्च इंजन यूज कर रहे हैं? सो वन बाय वन यू कैन टेल. दीक्षा, आप कौन सा सर्च इंजन यूज करते हो? गुड मॉर्निंग सर. सो कौन से सर्च इंजन में आप अपने रिसर्च टॉपिक्स वगैरह किसमें सर्च करते हो? सर वैसे गूगल पे ही करते हैं, ऐसे मतलब कोई और तो नहीं यूज करते. नॉर्मल गूगल पे करोगे ना तो यू विल गेट लॉट ऑफ results which maybe is related to some website or some other people. So अगर आपको रिसर्च पेपर ही चाहिए then go to scholar.google.com. और उसका एडवांटेज ये भी हो जाता है कि scholar.google.com पे अगर उसकी पीडीएफ कहीं पड़ी हुई है तो वो उसके लिंक भी दे देता है. अगर एक्चुअल वेबसाइट से नहीं लेना तो वो भी एडवांटेज होता है, और साथ में वो साइटेशन के अकॉर्डिंग और क्वालिटी के अकॉर्डिंग रैंक करते हैं. और इवन यू कैन यूज academics.microsoft.com. ये भी अच्छा सर्च इंजन है. इसमें भी काफी इंफॉर्मेशन आएगी मैंने वो वीडियो में.
सर्च इंजन, इसको पहले सर्च कर लेना वेबसाइट का नाम एंड देन यू कैन गो देयर। और अगर आपको हाई क्वालिटी चाहिए, यू आर ओनली बोदर्ड अबाउट द गुड क्वालिटी, देन यू कैन गो टू डायरेक्टली टू द scopus.com। तो इसमें whenever you are doing the search, so all of you, it is suppose आपने कोई एक पेपर पढ़ा which is not scopus index, actually क्वालिटी कहाँ से डिटरमाइन होती है, जैसे SCI इंडेक्स है, साइंस साइटेशन इंडेक्स, जहाँ साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड उसमें है या स्कोपस में है। सपोज आपने कोई पेपर पढ़ा है एंड विच इज नॉट इन दीज इंडेक्स इन दीज, सो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी कम होगी। एंड लेट्स से इफ यू साइट इन योर रिसर्च, आप अपने थीसिस में लिखते हो और जहाँ अपने पेपर में लिखते हो ऐसा पेपर जो इंडेक्स नहीं है, सो वो आपके काम की वैल्यू भी कम हो जाएगी। So it gives impression that even you are not aware that how to pick up a good quality papers. तो इसलिए जब रिसर्चर्स वर्क करते हैं, they do not use the normal search engines, they pick up specific search engines and just to determine quality। गूगल में तो everything index हो जाती है इसमें भी, but इनमें स्कोपस वगैरह में कम चीजें इंडेक्स होती है। ठीक है, तो now let's say you search some keywords of your search in the scholar.google.com and you go to first 100 results and you pick up any random URL and check whether it is present in P or not, and you do it 10 times. Let's say out of 10 times, let's say 8 times you find out those URL in the engine B कि आपने scholar.google.com में से 100 रिजल्ट में से आपने कुछ 10 URL देखे, उसमें से 8 तो आपको दूसरे सर्च इंजन में भी मिल गए। सो इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग रिजल्ट इन सेकंड सर्च इंजन इज 80% या 0.8, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। सेम यू रिपीट इट फॉर कि पहले अब सर्च इंजन बी में कर दें अपने कीवर्ड और उसके यानी रिवर्स कर देना, अब उसमें के पहले 100 में से ऐसी तो कोई 10 यूआरएल को चेक करना है कि सर्च इंजन ए में है कि नहीं। तो सपोज सर्च इंजन ए में यू गोट ऑल दोस 10, तो यानी कि उसमें 100% प्रोबेबिलिटी है या पूरा 1 प्रोबेबिलिटी है। सो आपको एक वेट मिल जाएगा। सो वेट ऑफ सर्च इंजन ए कि उसमें सारे के सारे अवेलेबल हैं एंड वेट ऑफ सर्च इंजन बी तो उसमें कितने अवेलेबल है। तो इसी से आपकी रेशो आ जाएगी कि सर्च इंजन ए बड़ा है कि सर्च इंजन बी बड़ा है। यू कैन कंपेयर टू सर्च इंजन्स, सो उसी से आपकी वेटेज आ जाएगी। जैसे हमें पता है कि scopus.com इज वेरी क्वालिटी बेस्ड इंडेक्स ओनली, ऑब्वियसली दिस इज स्मॉलर देन scholar.google.com। तो जब भी आप कंपेयर करोगे आपको पता चल जाएगा कि कितना स्मॉलर है, बिकॉज स्कोपस इंडेक्स ओनली गुड क्वालिटी पब्लिकेशंस। तो बट गूगल के अंदर तो सारी की सारी पब्लिकेशन होती है, वट एवर इज ऑन द वेब इज ऑन द गूगल। सो इन दिस वे यू कैन कंपेयर टू सर्च इंजन्स। सो दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड रैंडम यूआरएल्स फ्रॉम द रैंडम क्वेरीज। आपको ये टेक्निक के नाम याद रखना, बिकॉज जब आपका फाइनल एग्जाम भी आए तो यू में be asked that okay what is the random query technique, so how do we do it? We generate a random query और सर्च इंजन ए में जितने रिजल्ट्स आए उसमें से देखते हैं कि कितने परसेंट सर्च इंजन बी में भी है। अब सारे के सारे 100 देखने के लिए कोई 10 देख लो आप और ऐसे ही रिवर्स करके देखो एंड देन उनकी रेशो गिव्स यू द साइज ऑफ द 2 सर्च इंजन्स। ये क्लियर है सबको? क्लियर है आंचल, श्रुतिका? यस सर। हाँ जी सर। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड टेक्निक, सो क्वेरी बेस्ड चेकिंग। सो पहली टेक्निक में तो आपके क्वेरी हम रैंडम जनरेट कर रहे थे। नाउ सेकंड इज द क्वेरी। सो हियर दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड स्ट्रॉन्ग क्वेरी, ये आपको एग्जाम में भी आता है व्हाट इज स्ट्रॉन्ग क्वेरी। सो आपने एक स्ट्रॉन्ग क्वेरी जनरेट कर दी। सो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग क्वेरी? Strong queries is a large, maybe
some large number of keywords. So you pick up so let's say कि इंजन बी में कोई डॉक्यूमेंट है कि नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट उठाओ, कोई रिसर्च पेपर उठाओ, एंड जो रिसेंट है, in that research paper pick up 8 low frequency words and then check करो कि वो 8 लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स अब सर्च इंजन बी में चेक करो. सो ऐसा कोई भी रैंडम पेपर उठाओ आप. सो यू कैन आल्सो स्टार्ट विद सम ऑफ माय पेपर्स. जैसे मेरे कई पेपर्स में जो वर्ड्स हैं विच आर वेरी यूनिक, जो डिक्शनरी में नहीं होती. जैसे एक पेपर में मैंने वर्ड रोड स्पिग्मो यूज किया है. सो एक्चुअली पेपर इज अबाउट कि रोड पे ट्रैफिक कितना है, तो उसके ऊपर है, बट हमने वर्ड बनाया था आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर स्पिग्मो मैनोमीटर होता है, और रोड स्पिग्मो यानी कि रोड का ट्रैफिक. तो इन दिस मेनी पीपल मेक दिस काइंड ऑफ कीवर्ड्स. अभी भी आपने इफ यू हैव स्टार्टेड वर्किंग इन डीप लर्निंग, आपने देखा होगा लोग ऐसा वर्ड, नया वर्ड बनाते हैं, डीप फेस. सो जो फेस रिकॉग्निशन के लिए या फेस नेट, सो पीपल यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स. सो ऐसे 8 लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स उठाओ उस डॉक्यूमेंट के. जो आपको ये डॉक्यूमेंट मिला कहाँ से? सर्च इंजन ए से मिला है. एंड क्वेरी टू बी check if D is present in the result set or not. So this kind of strong query which is based on document D, which is coming from search engine A. तो अगर वो अवेलेबल है, इट मीन्स कि सर्च इंजन बी में वो इंडेक्स है. सो आपको 8 वर्ड देने. अगर नहीं अवेलेबल है तो इट इज नॉट इंडेक्स इन सर्च इंजन बी. बट इसमें कई प्रॉब्लम्स आएंगी आपको. कई बार 8 लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स में आपको ये डी नहीं मिल रहा, बट अनदर डॉक्यूमेंट D1 मिल रहा है जिसमें आ रहे हैं वो इंडेक्स है, उसमें भी वो वर्ड्स आ रहे हैं. सो ऐसी स्ट्रॉन्ग क्वेरी बनाना काफी टफ होता है, क्योंकि 8 कीवर्ड कौन से होने चाहिए. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो दैट व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग क्वेरी. समटाइम्स जैसे हमें पता है HTML पेजेस में फ्रेम्स होते हैं, सो फ्रेम्स में डिवाइड होता है. एंड समटाइम्स इंडेक्सिंग भी फ्रेम वाइज अलग अलग होती है. इसका URL अलग होता है, इसका URL अलग होता है. एंड समटाइम्स समथिंग इज अवेलेबल एक डॉक्यूमेंट में नहीं है, बट उसके किसी और फ्रेम में या HTML में है, तो वहां से भी हो सकती है. समटाइम्स कई वेबसाइट में ऐसा होता है कि वो वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, बट दे आर रीडायरेक्टिंग यू टू द अनदर पेज, और जिस पेज पे रीडायरेक्ट हो गए हो आप, वहां पे वो कीवर्ड दिख नहीं रहे, तो यू विल फील लाइक कि शायद गलत रिजल्ट आ गए. मैनी टाइम्स जब इतने 8 कीवर्ड लिखोगे, स्ट्रॉन्ग वर्ड लिखोगे, मैनी इंजन्स में टाइम आउट विल गिव यू नो रिजल्ट. सो काफी सर्च इंजन्स में जैसे से नंबर ऑफ कीवर्ड्स हम बढ़ा देते हैं, तो ये आप नोटिस करके देखना, काफी डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स देके, तो कई बार ज्यादा कीवर्ड्स आने पे नो रिजल्ट्स आ जाते हैं. तो देन यू आर वंडरिंग, नहीं ये तो कहीं ना कहीं तो ये 8 कीवर्ड्स हैं किसी डॉक्यूमेंट में, बट व्हाई इट इज कमिंग इन नो रिजल्ट्स. इवन गूगल में भी आ जाता है कई बार, because engine time out हो जाता है. So engine search engine do not want to take lot of time, so they want कि अगर टाइम ज्यादा लग रहा है वो टाइम आउट हो जाएगा, so that you come out with an alternate query. ये गूगल में भी कई बार होता है. गूगल में कई बार सेम set of keywords in a query gives you result and sometimes won't give you results because of engine time out. बाकी सर्च इंजन में काफी बार होता है. स्कोपस में तो it is happens lot of time. And then there is always question why this 8 is 8 word is good enough, whether it is a strong, why not 7, why not 9. So there is no clear cut answer. This is just a number suggested by researcher who first proposed the strong query. So 8 कोई magic number नहीं है. Somebody say कि हाँ 5 पे भी हो सकता है, 6 पे भी हो सकता है, या even somebody say कि नहीं even stronger होनी चाहिए 9, 10. So 8 is not a magic number. You can pick up any long query, क्योंकि shorter queries होंगी तो काफी documents आ जाएंगे. So query based checking में you have to have a very long query, large number of keywords. So 8 is not a magic number, but you can pick up any 7, 9, 10 कुछ भी ले सकते हो आप. ये क्लियर है सबको? स्ट्रॉन्ग क्वेरी ईशानी क्लियर है सबको? सृष्टि? हाँ जी सर क्लियर है. So advantages and disadvantages.
statistically sound and under the induced weight, कई बार लगता है कि इसी से हम चेक हो जाएगा. Many times whenever we want to compare search engine, even you might have done it. कई बार आपने Bing में कुछ सर्च किया और फिर Google पे सर्च किया, and then you find कि हाँ अभी Google में better results आ रहे हैं. So many times we do it unintentionally कि हमारे keywords के base पे we keep on doing this. But bias is induced by the random query. जब भी हम ऐसी random चीजें लिखते हैं, random strong query लिखते हैं, so why it happens? Because of the query bias. So it favors content rich pages in the language of the lexicon. काफी जगह पे query bias जो keywords हैं उसके base पे bias हो जाते हैं results. हर सर्च इंजन का एक रैंकिंग बायस होता है. ये आप इन सर्च इंजन में देखना, आप किस पेपर को पहले लेके आ रहे हैं. गूगल स्कॉलर किस पेपर को पहले लेके आता है और एकेडमिक डॉट माइक्रोसॉफ्ट वो किस पेपर को पहले लेके आता है. तो रैंकिंग एक बायस होता है. सो हर किसी का अपना एल्गोरिथम है. सो दे रैंक, दे यूज द कंजक्टिव, दे पिक अप ऑल द रिजल्ट्स एंड देन रैंक इट. और रैंकिंग करने का तरीका सभी सर्च इंजन का डिफरेंट है. देन चेकिंग बायस, डुप्लीकेट्स. आपको पता है कि हर पेपर के डुप्लीकेट्स होंगे और सम इम्प्रोवाइजेशन पेजेस होंगे जो ओमिटेड होंगे. सो इस टाइप का चेकिंग बायस हर सर्च इंजन में डिफरेंट होगा, उससे भी रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं. डॉक्यूमेंट और क्वेरी रिस्ट्रिक्शन बायस, ज्यादातर जो जैसे स्कोपस है, व्हाट इट डज इज इट नेवर check full document, it never index full document. It index title, abstract, and the keywords provided by you for indexing, not the full paper. But Google does the full paper. So जो सिंपल सर्च इंजन हैं जैसे स्कोपस वगैरह, सो उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट पे ऊपर कितना डॉक्यूमेंट करना है, दे आर नॉट indexing the full document because they are smaller search engines. And but Google does it for the full document. Even if you have something given in the conclusion में आपने नए words लिखे तो वो भी index हो जाएगा. So then malicious bias, this is because of the advertisement or because of the biasing by the people. ये आपको normal search engine जैसे Twitter, Facebook में काफी malicious bias governments keep on complaining, different people keep on complaining that they index certain videos but doesn't index other videos, even in the YouTube and other things. So these kind of malicious bias because they have certain policies which they follow to index the things. Then operational problems. So these do happen in a smaller search engine. You might not have noticed in the Google recently, but these do happen in many search engines. That timeout, failure, they are not able to complete the indexing, and engine inconsistencies. So this usually happens a lot of time in the search engine like Scopus, not in the Google, but Google में भी हमने देखा था Google Dance earlier term use होती थी कि जब Google अपना इंडेक्स मॉडिफाई करता था, but nowadays it doesn't happen too often because they have a better way to do this. So engine inconsistencies are usually there in Scopus or then Thomson Reuters का search engine है, जहाँ Mendeley का है search index. There are so many search engines, so उनमें inconsistencies usually happens, and these usually happen whenever they are modifying their way of indexing it. Usually they notify that this is going to happen. Even जो smaller sites हैं Twitter वगैरह, अब because इनमें भी searching facilities हैं, so lot of tweets, even though they are only indexing their tweets, जहाँ YouTube है they are only indexing their videos, or Facebook or any blog, but still these kind of modifications keep on happening. So they keep on reporting that this kind of inconsistency may happen. So in all those cases, if you are comparing using strong query, so then you can face problems. You have to be sure that these type of problems can be there. Now the third type of approach is random search.
So you do the random search, extracted from a local log. First time this type of approach was proposed in 1997. इसकी एक आगे स्लाइड आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्वेरीज। जैसे अभी पीछे मैंने बताया कि आप खुद क्वेरी लिखो, बट देन यू विल से कि ऑन सपोज वन ऑफ यू राइट ए क्वेरी, लेट्स से सृष्टि राइट ए क्वेरी 1, उसमें सर्च इंजन ए comes better, and let's say Ishani writes a query 2, उसमें search engine B comes better. So जहाँ काफी set of queries में, so Shruti finds कि search engine A better है, and another set of queries में Ishani finds कि search engine B better. So how to compare the thing, because you are doing randomly. So then Laros and Giles suggest that let's build some database for that. ये क्वेरीज का डेटाबेस होना चाहिए और उसी डेटाबेस पे दोनों को कंपेयर करना चाहिए, ऐसे रैंडमली नहीं होना चाहिए। सो यूज ओनली दोज क्वेरीज विद स्मॉल रिजल्ट सेट्स। उन्होंने ऐसी कई क्वेरीज का डेटाबेस बना लिया एंड देन काउंट द नॉर्मलाइज यूआरएल्स भी कुछ नॉर्मलाइज कर लो, पहले 1000 या पहले 100 कुछ एक वैल्यू के बेस पे आप कंपेयर करोगे। यू आर नॉट गोइंग जिसने ज्यादा रिजल्ट दे दिए वो बेटर है, and because it may be because of to improve the recall, maybe Google is giving more results, it doesn't mean it is always better. You pick up first 100 results and then do the ratios, क्योंकि आप पूरे results नहीं देख रहे, you are only picking up first 100, उन्हीं की ratio देखो आप, and that give you an idea which search engine is a better search engine. Now is approach का advantage क्या है? So it is a better reflection of human perception of coverage, because जो database बना है, so it is first 97 में, जैसे I told you कि Laros and Giles ने दिया था, till today 2019 तक काफी database ऐसे आते हैं, हर साल ही नया आ जाते हैं। अभी recently 2020 में किसी ने generative adversarial networks यूज करके, यानी कि deep learning यूज करके ऑटोमेटिकली database बनाया। So अब ह्यूमन से अलग से फर्स्ट टाइम मशीन जनरेटेड डेटाबेस आया क्वेरीज के। अर्लियर टिल देन 2019 तक ऐसे डेटाबेस आते थे। एंड लेट्स से यू आर ए रिसर्चर इन दिस फील्ड और आपने एक एल्गोरिथम बनाया है, यू वांट टू कंपेयर योर एल्गोरिथम, सो देन यू हैव टू पिक अप वन ऑफ दिस डेटाबेस टू से दैट माय एल्गोरिथम वर्क्स बेटर इन कंपेयरिंग these queries as compared to any other algorithm. तो आपको इस तरह से रिसर्च करनी होती है, you have to pick up these databases. But recently अब machine generated database भी आने स्टार्ट हो गए। So main issues क्या आएंगे? जो सैंपल्स जो भी आपके सर्च इंजन की सैंपल्स हैं, they are correlated with the source of log. अब कई बार क्या होता है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे सर्चिंग कर रहा हूँ UIT में। So UIT में हमारे प्रॉक्सी का एक लॉग बन रहा है और एक कैश मेंटेन हो रही है, और सपोज मैंने कोई अपना एल्गो इस डेटाबेस के ऊपर चलाया, तो कैश में वो स्टोर हो गया, कुछ रिजल्ट स्टोर हो गए जहां जहां मैंने क्लिक किया था। सो दोज रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन द कैश। नाउ आई आस्क माय स्टूडेंट टू कंपेयर द सेम थिंग, तो मैंने अपने स्टूडेंट को भी सब सेम करने को कहा आफ्टर 2 hours और 3 hours. So but what would happen, because मेरी लोकल प्रॉक्सी की कैश में कुछ रिजल्ट स्टोर थे, उनको वेटेज ज्यादा मिल जाएगी, उनकी रैंकिंग ऊपर आ जाएगी। So because of these reasons, because Google gives more weightage to the results in your local proxy, local cache या local community में जो सर्च होता है उसकी रैंकिंग ऊपर ले आता है, तो उसके कारण भी कोरिलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो but if same query is executed by someone in USA very far away from me, उसको different result दिखेगी। So इस कारण भी ऐसे अगर हम क्वेरीज को बार बार चलाते हैं एक ही जगह पे, तो वो हमें एक लॉग में से सोर्स में से आना शुरू हो जाता है। सो ऐसी कैश जैसे UIT के सर्वर में मेंटेन होती है, फिर जो ISP हैं जितने भी, जैसे आप अगर जियो का लोग इंटरनेट यूज कर रहे हो,
तो जियो भी ऐसी कैश मेंटेन करते हैं। तो जहां जहां आप करते हैं तो वहां से उस सोर्स से भी रिजल्ट बायस हो जाते हैं। देन सेम क्वेरीज पे काफी डुप्लीकेट रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। सो डुप्लीकेट क्योंकि सेम पेपर 10 जगह पे हो सकता है, तो सर्च इंजन, some of search engines deal with duplicates and others do not. And then technical statistical problems. So so these may come. So we must have known zero results अगर मैंने strong काफी बड़ी query लिखी है। So अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक सर्च इंजन से मुझे जीरो रिजल्ट्स मिल गए, which may happen because of engine inconsistency। और ये काफी बार होगा अगर आप scholar.google.com को कंपेयर करोगे स्कोपर से, दिस माइट हैपन। एंड सो दीज इशू में कम व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद दिस टेक्निक। सो अब जब इन्होंने डेटाबेस बनाया था, सो दे फर्स्ट स्टार्टेड बाय मेकिंग क्वेरीज फ्रॉम जो नेशनल एम्प्लॉय कॉर्पोरेशन है, वहां से उन्होंने लॉग में से कैश में से क्वेरीज उठाई थी लॉरेंस एंड गाइल्स ने। उन्होंने 6 सर्च इंजन पे चेक किया था। सो अभी आजकल क्या होता है, ये जो डेटाबेस है, दिस इज हैज बीन एक्सपेंडेड टू द इवन 2 मिलियन क्वेरीज ओवर द इयर्स। यू कैन वेल इमेजिन कि वहां 1000 क्वेरीज पे चलाते थे, अब मिलियन मिलियन क्वेरीज पे भी रिजल्ट्स चलाने पड़ते हैं। सो बट इन्होंने साथ में रखा था कि पहले 600 रिजल्ट्स उठाएंगे, बट हियर रिसर्चर्स नाउडेज दे फोकस ऑन द फर्स्ट 1000 और कई बार फर्स्ट 25,000 रिजल्ट्स, इस तरह से फोकस करते हैं। दे काउंट द यूआरएल फ्रॉम ईच इंजन आफ्टर वेरीफाइंग क्वेरी मैच। फिर वो साइज कंपेयर करते हैं कि किसमें यूनिक ज्यादा है, किसकी कवरेज ज्यादा है, एंड उनकी रेशियो फिर देखते हैं, एंड दैट गिव्स देम द एस्टिमेटेड इंडेक्स साइज कि कौन सा सर्च इंजन बड़ा है, किसमें ज्यादा रिजल्ट्स आए हैं, फर्स्ट 600 में से कितने यूनिक है, उनकी यूनियन लेके और फिर उनका इंटरसेक्शन लेके देन दे फाइंड आउट कि किस में डिफरेंट यूनिक रिजल्ट्स आए, और उतना ही वो सर्च इंजन बड़ा हो जाएगा। सो दिस वाज द टेक्निक यूज्ड टू कंपेयर द सर्च इंजन्स, एंड नाउ द एल्गोरिथम्स टू डील विद दीज मेनी क्वेरीज, दिस इज आल्सो एक्टिव सर्च एरिया। जो दिस इज द एग्जांपल कि किस टाइप की क्वेरीज थी पहले डेटाबेस में। सो दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच दे हैव यूज्ड। तो इस टाइप की क्वेरीज के ऊपर चेक किया था, एंड देन you can see that these they have picked up those queries which are not very frequent queries, and which are not very rare as well. So BHP एक set को उन्होंने pick up किया था। As I told you कि nowadays ये database काफी huge हो गए, और 2019 हर साल एक नया database आते हैं, और अभी machine generated data set भी आने start हो गए। So this is the example of first time when they give these queries. Now next technique is random IP addresses. In this technique we generate any random IP address, कोई भी random IP address कुछ भी generate कर दो, कुछ भी आपके mind में, कुछ भी आपके algorithm से कुछ भी, you come out with any random IP address. So अब इस IP address में you try कि web server पे कोई website है या नहीं। It might be possible कि कोई वेबसाइट ना हो because it is a random IP address, but अगर कोई वेबसाइट है तो उसके सारे पेजेस कलेक्ट कर लो। सो सपोज आपने कोई रैंडम IP एड्रेस बनाया और उसमें कोई वेबसाइट मिल भी गई आपको वेब सर्वर पे, उस वेबसाइट के सपोज 25 पेजेस है, यू कलेक्ट ऑल ऑफ देम और उसमें से एक रैंडम पेज उठा लो। सो यू हैव पिक्ड अप a random page from a random IP एड्रेस, कुछ भी आपने लिखा था, और अगर वेबसाइट मिल गई है तो उसमें से रैंडमली आपने एक पेज उठा लिया। सो आपने HTTP रिक्वेस्ट की रैंडम IP एड्रेस पे। ऑब्वियसली कई बार क्या होगा कि आपको एम्प्टी या ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होगी, कई बार ऐसे पेजेस मिलेंगे व्हिच यू कैन नॉट फेच। सो 99 की एक स्टडी में इट वाज फाउंड दैट कि 2.8 मिलियन IP एड्रेसेस वर्किंग है जो क्रॉलेबल है, एंड
तब 2500 वेब सर्वर होते थे at that time. Nowadays, this figure has gone beyond that. So 16 million से भी beyond चलेगी. This is more than 250 million तक different IP addresses because of so IP addresses का हमने size बड़ा कर दिया. So 128 bit के कर दी. तो उसके कारण IPv6 के कारण अब number of IP addresses बढ़ गई. And these servers have increased more than 100 times. वेब सर्वर तो बहुत ज्यादा बढ़ गए. इवन हमने भी यूआईटी में भी वी हैव 2 वेब सर्वर्स एंड पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर देयर आर मेनी वेब सर्वर्स. सो दीज आर आल्सो इंक्रीज्ड. तो सपोज अगर आपको वेब क्रॉलर बनाना है, सो यू नीड टू क्रॉल ऑल ऑफ दीज वेब सर्वर्स. सो 2001 में 8.7 मिलियन होस्ट मिले थे. इन ए सिंगल ईयर it increased to 510 37.2. Around 2009 this figure reached 1 billion host. उसके बाद थोड़ी सी प्रोग्रेस कम रही है, बट स्टिल इट इज मोर देन 30 बिलियन के करीब होस्ट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड होस्टेड है. सो जो पहली स्टडी हुई थी उसमें तो उन्होंने सिर्फ 2500 सर्वर पे ही चेक किया था. सो दे चेक्ड ओनली ऑन द 2500 सर्वर एंड उसमें से पेजेस निकाले थे 800 मिलियन पेजेस. एंड उनके मेटा टैग, हर पेज में से मेटा टैग में से कीवर्ड निकाले उन्होंने. एंड उन कीवर्ड के बेस पे चेक किया कि वेब सर्च इंजन ने उसे इंडेक्स किया है या नहीं किया. सो दे चेक्ड इट फॉर ईच सर्च इंजन बेस्ड ऑन दीज मेटा टैग्स. These meta tags are in these 800 million pages, and based on that they try to check whether this is indexed in search engine A and then in the B. Advantages: this is a seems like a complete, even though they checked it only for the 2500 web server, where there are many web servers which are existing, but still it is a clean statistics. Independent of crawling strategies, कोई हमने query predetermine नहीं की. We checked all the websites. But main disadvantage, कोई duplication को deal करने का way नहीं था. Many hosts might share one IP or not accept request. काफी host तो ऐसे request लेते नहीं है because of the जो website application firewalls होते हैं, they do not take these results. So if you are aware that, अगर आपने UIT में भी देखा होगा, हमने Fortinet लगाया हुआ है फायरवॉल. जब आप pgu.ac.in को भी एक्सेस करते हो, so we try to make sure this request is not coming from any bot or so इसमें Fortinet के अंदर there are many things which try to check firewall में कि it is not coming from any, and it blocks many requests. So काफी रिक्वेस्ट आपकी ब्लॉक हो जाएंगी. एंड काफी होस्ट एक ही आईपी पे होते हैं. ज्यादातर ये रहते ही है, जैसे हमने अपनी वेबसाइट हमें एक ही आईपी एक ही होस्ट पे नहीं रहती, वी कीप ऑन मल्टीपल होस्ट्स. एंड देयर इज नो गारंटी दैट ऑल पेजेस आर linked to the root page. So employee pages, there are many pages on the web which are not linked, which are only for internal usage. So जो बाहर visible नहीं होते. So power law for number of pages per host generates bias towards the sites with the few pages. जिनमें कम पेज है उनमें बाइसिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी. जो बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं उनमें से हमने कुछ 10 पेज उठा लिए, और जिसमें 10 ही पेज थे उसमें भी 10 उठा लिए. सो बायस होने की चांसेस है. एंड दिस टेक्निक is influenced by spamming. So spam, we know that search engine optimization, many people have generated these kind of web pages which are multiple IP for same server. तो काफी कुछ ऐसी वेबसाइट बनी होती है. इस टेक्निक में उनको चेक नहीं कर सकते. हमने तो रैंडमली ऐसे वेब सर्वर से IP एड्रेस जनरेट करके उठाया. So it is very difficult to deal with these things when we are using this technique. Then people say कि okay, you do the random walk. आप एक वेबसाइट से स्टार्ट हो जाओ pu.ac.in, इसमें किसी हाइपरलिंक पे गए, उससे किसी और हाइपरलिंक पे गए,
एंड यू कीप ऑन डूइंग द रैंडम वर्क. सपोज इसमें आपको यूजीसी का पेज मिला, यूजीसी की वेबसाइट में किसी और वेबसाइट का पेज मिला, वहां से आपको यूएसए की वेबसाइट का पेज मिला, एंड यू जनरेट ए ग्राफ आउट ऑफ दिस. और जहां पे आपका ब्लॉक हो गया, सपोज यहाँ से आगे कोई पेज नहीं मिल रहा, यू जंप टू रैंडम टू न्यू पेज. सो कई बार जंप किसी भी पेज वापस भी आ सकते हो, बैक ट्रैक भी कर सकते हो, कहीं और भी जंप कर सकते हो. एंड ऐसा नहीं है कि गोल गोल उसी में घूम रहे हो, एंड यू कैन जंप आउट ऑफ द ग्राफ. एंड after some time you say that okay, my graph has 1000 nodes or even bigger, 10,000 nodes. So एक बहुत बड़ा ग्राफ बना लिया, and then you treat that as कि उसके पेजेस सर्च इंजन ए में कितने हैं और सर्च इंजन बी में कितने हैं. So आपके अपने ग्राफ में which you have created by random walking out, then you check, compare कि how much this graph is indexed in search engine A and how much in search engine B, and then you can compare it. सो देर आर मे बी, जब आप ग्राफ सर्च करोगे तो आपने देखा होगा कई साइट्स में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, कुकीज है, फ्लडिंग है, सो यू डोंट नो हाउ टू मूव अराउंड. सो देर आर ऑब्वियसली मर्जिंग काफी हो सकती है. बट वंस यू हैव क्रिएटेड दिस ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर भी आप स्ट्रॉन्ग क्वेरी लगा सकते हो कि स्ट्रॉन्ग क्वेरी उनके पेजेस में से जो 8 कीवर्ड निकाले, उस 8 कीवर्ड के बेस पे क्या सर्च इंजन ए में कोई रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर्च इंजन बी में कोई पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है. यानी कि जो आपने ग्राफ बनाया, यू टेक दैट एज इंटरनेट वेब एज ओनली. तो आपके 10,000 नोड्स का ही वेब है, और उसी के बेस पे देखो कितनी इंडेक्सिंग हुई. सो अगर इन 10,000 में से एक सर्च इंजन ने 9,000 पेज इंडेक्स किए, दूसरे ने 7,000 किए, so that gives you an idea that how much indexing they have done. So advantages, again this is clean because you are doing randomly and making a graph, and could work even, you can take 10,000 to 1 million as well, जितना मर्जी बड़ा ग्राफ बना सकते हो. बट डिसएडवांटेज, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सीड पॉइंट क्या होगा, जैसे मैंने pg.ac.in लिखा है, ग्राफ आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा. और अप्रोक्सीमेशन प्रैक्टिकली दिस मे नॉट बी वैलिड, पीपल मे नॉट एग्री कि आपके सीड पॉइंट के बेस पे वो चल रहा है. एंड इट इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म. जो भी ग्राफ बनाओगे, दिस इज नॉट ट्रू वेब. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है?